अनपढ़ 2 बार नहीं रे, तीसरी बार। परेश रावल के हेरा फेरी 3 क्विट करने पर आया एक बड़ा अपडेट। परेश रावल रिप्लाइज टू अक्षय कुमार लॉ सूट ओवर क्विटिंग हेरा फेरी 3। दरअसल ये सारा मामला है परेश रावल के हेरा फेरी 3 क्विट करने का, जहां उसके बाद अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें भेजा नोटिस। Well, Paresh Rawal's sudden departure from the project sent shockwaves in the film industry and among the fans of the franchise who have been waiting for the third part for close to 20 years. Well, Paresh Rawal ने अपनी तोड़ी चुप्पी over this controversy and said his lawyer has responded to the legal suit. परेश ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, My lawyer Amit Nayak has sent an appropriate response regarding my rightful termination and exit. Once they read my response, all issues will be laid to rest, wrote the 69-year-old actor who essayed the fan favorite role of Babu Rao Ganpat Rao Apte. हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी नजर आने वाले थे और डायरेक्टर प्रियदर्शन, जिन्होंने ओरिजिनल हेरा फेरी 3 डायरेक्ट की थी, वो ही हेरा फेरी 3 को भी डायरेक्ट करने वाले थे। A lawyer representing Akshay Kumar's Cape of Good Films recently stated that Rawal's decision to exit the project could lead to severe legal consequences. और उनके लॉयर ने कहा था, I think there will be severe legal consequences. It's of course of the franchise. We have written to him letting him know that there are a lot of legal consequences involved. There have been expenses incurred towards the cast, towards the crew, towards leading senior actors, logistics, equipment, shooting of the trailer. और ये सारी बात कही पूजा तड़के ने, जो कि है जॉइंट मैनेजिंग पार्टनर ऑफ परिणाम लॉ एसोसिएट्स, which is representing अक्षय कुमार's banner. पूजा ने यह भी कहा कि रावल had clearly indicated his involvement in the project through a social media post in January as well. Therefore, there were contracts entered into the shooting for the trailer, and in fact, there was some portion of about 3.5 minutes of the film itself that had been shot. और फिर अचानक से कुछ दिन पहले we received a notice from परेश जी saying that he is no longer associated with the film and does not want to be associated with the film. So it's taken everybody by shock and surprise, of course. वेल, परेश रावल के स्टेटमेंट से एक बात तो साफ है कि वो हेरा फेरी 3 से एसोसिएट नहीं होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हेरा फेरी 3 की फिल्म मेकिंग पर इस बात से काफी फर्क पड़ा है। वेल, अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इस केस में आगे क्या नया मोड़ आता है।